लूनवसई के मंदिर अत्यंत ही कलात्मक एवं विशिष्ट हैं। अन्य मंदिरों में महावीर स्वामी मंदिर, पीतलहर मंदिर तथा पाशरोनाथ मंदिर प्रमुख हैं। मंदिर परिसर में उपलब्ध शिलालेखों के अनुसार वर्ष 1031 ईस्वी में 1500 शिल्पियों व 1200 श्रमिकों के 12 वर्ष अथक प्रयासों एवं 18.53 करोड़ रुपए की लागत से श्वेत संगमरमर के पाषाणों से निर्मित इन मंदिरों की छतों, गुंबदों, तोरण द्वारों की अलंकृत नक्काशी और नायाब शिल्पकला की झलक प्रतिवर्ष देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे क्षेत्रीय पर्यटन, स्थानीय रोजगार तथा आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होता है। मंदिर में जैन तीर्थंकरों की 53 देहरियों में मूर्तियां स्थापित हैं, जिनमें भगवान ऋषभदेव के अतिरिक्त मां सरस्वती, लक्ष्मी जी, अंबा जी के साथ नरसिंह अवतार के हिरण्यकश्यप वध, श्री कृष्ण द्वारा कालिया दमन, शेषनाग की शैया की मूर्तियां भी स्थापित हैं। इन मंदिरों में जैन संस्कृति के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ साथ उस युग की हिंदू संस्कृति, नृत्य नाट्य कला के अद्भुत एवं चित्ताकर्षक चित्र जो अंकित हैं। शिल्प सौंदर्य की सूक्ष्मता, कोमलता, अलंकरण की विशिष्टता और गुंबदों की छतों पर स्फटिक बिंदुओं की भांति झूमते कलात्मक पिंड, मेहराबों का बारीक अलंकरण, शिलापट्टों की पर उत्कीर्ण पशु पक्षियों, वृक्षों, लताओं, पुष्पों आदि की आकृतियां अलौकिक आनंद की अनुभूति प्रदान करती हैं। यहाँ की वास्तुकला एवं शिल्प कौशल अद्वितीय है, जिसकी मिसाल विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। देलवाड़ा जैन मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं है, अपितु भारत की बहुलतावादी संस्कृति, अहिंसा, सहिष्णुता तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के जीवंत प्रतीक भी हैं। अतः माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्थलों के संरक्षण, संवर्धन एवं इनकी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता सुनिश्चित करने हेतु इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र प्रारंभ किया जाए। इससे हमारी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा सुनिश्चित होगी तथा भावी पीढ़ियों को भारत की गौरवशाली परंपरा से जोड़ने का सशक्त माध्यम भी प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान मस्तान राव यादव, respected Chairman sir, I wish to draw the attention. No. Some clarification are required. I wish to draw the attention of this August House to impact of the United States tariff policies on Indian exports, while also placing on record the important positive development announced on 2nd February 2026, as well as the issues that will require clarity and sustained engagement. During 2025, the United States imposed a 25% reciprocal tariff on Indian goods. No. Let me complete, sir. Followed by an additional 25%. Please don't interfere. Let him speak. Linked to India's purchase of Russian oil. As a result, several Indian exports faced an effective tariff burden of 50 to 58%, impacting nearly $50 billion worth of shipments to US market. These measures severely disrupted trade flows, eroded competitiveness, and created uncertainty for exporters, particularly MSMEs and labor-intensive sectors. In this context, I would like to place on record my appreciation of the determined efforts of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji and the NDA government and Commerce Ministry, whose proactive diplomatic engagement with the United States has yielded tangible results. The announcement on 2nd February 2026 of an understanding to reduce the reciprocal tariff from 25% to 18% is a significant relief on the Indian exporters and a strong signal to India's growing stature in global trade negotiation. The positive market response, including strengthening of the Indian rupee, reflects confidence in this leadership-driven engagement. At the same time, it is important to flag a crucial area of uncertainty. The announcement so far is based on public statements and oral communication, and formal notification is yet to be issued under the US law, including under the International Emergency Economic Powers Act. Notably, President Trump's statement refers significantly to the reciprocal tariff and doesn't explicitly confirm the withdrawal of the additional 25% punitive duty. This distinction
is evident from the US customs entry documents, including shrimp import filings, which show two separate duty codes, one for the reciprocal tariff and another for the Russia-India punitive levy, each levied independently. Until a formal legal clarification is issued, exporters continue to face uncertainty. The shrimp industry particularly illustrates that clearly Indian shrimp exports to the US declined by around 26% in late 2025 due to high tariff, while the reduction to 18% restores competitiveness and offers immediate relief. A full revival depends on the complete removal of the punitive duty. I therefore appeal to the government to continue and intensify dialogue with the US administration to secure formal withdrawal of the punitive tariff. श्रीमान जकेश जी. Thank you, sir. Sir, my concern over the growing drug menace threatening India's youth. The escalating drug menace in our country poses a grave threat to public health, public safety, and the future of our youth. Across India, drug abuse and trafficking are spreading rapidly, particularly among students and young professionals. Synthetic drugs are increasingly circulated through organized interstate and international networks, exploiting urban centers and digital platforms. Within this national crisis, Bangalore stands out as a particular concerning example. As a major metropolitan city and a technology hub, it has witnessed a sharp rise in drug consumption and trafficking. Educational institutions, workplace, entertainment hubs, and residential areas have become prime targets for drug syndicates, highlighting the urgent need for stronger intelligence, preventive policing, and coordinated enforcement. The impact of drug abuse goes far beyond the individual. It devastates family, financial hardships, domestic conflicts, and lasting emotional trauma. It fuels crime, mental illness, road accidents, workplace inefficiency, and the broader social instability. Despite this risk, conviction rates remain low, exposing gaps in investigation and prosecution, while rehabilitation, counseling, and awareness programs remain insufficient. The effectiveness of our national response is further weakened when certain state governments, including Karnataka, fail to demonstrate sustained commitment and seriousness in tackling this menace. A comprehensive and decisive approach is required, combing strict enforcement with widespread awareness, early intervention, and accessible de-addiction rehabilitation. I urge the government to spearhead a strong national movement against drug abuse and trafficking with a coordinated action, strict enforcement, and robust support system to safeguard our youth, protect families, and strengthen society as whole. Thank you, sir. श्रीमान चंद बलबीर सिंह जी. श्रीमती ममता मोहंता जी. धन्यवाद सभापति महोदय. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महोदयंकर सक्षम एवं दूरदर्शी नेतृत्व एवं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदयंकर मार्गदर्शन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयुष्मान भारत योजना एवं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र माध्यम देशर गरीब एवं वंचित और आदिवासी समुदाय को सस्ता एवं गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा पहुँचाइबा पई ग्रहण करा जाइथिबा निरंतर प्रयास गुड़ी को मु हृदयपूर्वक प्रशंसा करुछि. केंद्रीय बजेट रे स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करबा पई जिला हॉस्पिटल क्षमता वृद्धि, आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधार विस्तार, संलग्न स्वास्थ्य और पेशाजीवी मानक प्रशिक्षण एवं टेलीमेडिसिन सेवा को सुदृढ़ करने उपर विशेष गुरुत्व दि जाइछि, जहाँ विकसित भारत 2047 लक्ष्य को साकार करने दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप. महोदय, ओडिशार
मयूरभंज जिला एक आदिवासी बहुल एवं भौगोलिक भाव दुर्गम अंचल ଯେଉଁଠାରେ आयुष्मान भारत एवं जन औषधि केन्द्र भली योजना द्वारा गरीब और आवश्यकतामंद नागरिक मानक मागणा और सस्ता चिकित्सा सुविधा मिली। यही पदक्षेप स्वास्थ्य सेवा को शेष लोक पर्यंत पहुँचाइबारे साहाय्य करिछि। यही प्रसंग में मु सरकार को विनम्र अनुरोध करुछि जे मयूरभंज जिला हॉस्पिटल को पर्यायक्रमे एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भावे विकास करिबा पाई विचार करा जाऊ, जहा द्वारा गुरुतर रोगर चिकित्सा पाई लोक माने बड़ सहर को जीवाकू बाध्य हेबे नाही। सेहीपरि आदिवासी और दूर दूरांत अंचल टेलीमेडिसिन सेवा एवं जिला हॉस्पिटल में प्रस्तावित आपातकालीन और ट्रमा केयर सुविधा को आहुरी सुदृढ़ करा जाऊ। यह सहित मातृ और शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम कार्य रूपायन उपरे मध्य विशेष गुरुत्व दिया जाऊ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मते पूर्ण विश्वास अछि जे माननीय प्रधानमंत्री महोदयंकर नेतृत्व में सांप्रतिक बजेट प्रावधान गुड़िक अनुजाई सरकार मयूरभंज परी आदिवासी बहुल जिला मान स्वास्थ्य सेवा अधिक सुलभ और सशक्त प्रभावशाली करने आवश्यक पदक्षेप नेवा दरकार। धन्यवाद। श्री आर धर्मर जी। Honorable Chairman sir, தமிழ்நாட்டில் உள்ள எனது ராமநாதபுரம் தொகுதியை கல்வி வளர்ச்சி தொடர்பான ஒரு முக்கியமான விஷயத்தில் மீது இந்த அமைப்பின் கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காக எழுதியுள்ளேன். தற்போது ராமநாதபுரத்தில் உள்ள அருகிலுள்ள பகுதியில் கேந்திர வித்யாலயா பள்ளி எதுவும் இல்லை என்பதை இங்கே பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன். இதனால் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு ஊழியர்களின் குழந்தைகள் உட்பட ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் தரமான சிபிஎஸ்இ கல்வியை பெறுவதில் பெரும் சிரமத்தை எதிர்கொள்கின்றன. எனவே ராமநாதபுரத்தில் ஒரு கேந்திர வித்யாலயா நிறுவுவதற்கு கிராமப்புற மாணவர்கள் பெரிதும் பயனளிக்கும் என்பதை பதிவு பண்ணி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். श्रीमान राजीव भट्टाचार्य जी। माननीय सभापति महोदय, आज हमको बोलने का मौका देने के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सभापति महोदय, ये नॉर्थ ईस्ट पिछड़ा हुआ राज्यों में एक त्रिपुरा है। मोदी जी आने के बाद 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट विकास के लिए मोदी जी ने जो काम किया है इसमें त्रिपुरा भी शामिल है। और त्रिपुरा में एक नेशनल हाईवे होता था, लेकिन मोदी जी आने के बाद 8 नेशनल हाईवे बनाने का काम मोदी जी ने किया है। इनमें से 6 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये बना हो चुका है और उसमें बाकी 2 में काम चल रहा है। लेकिन दुख की बात है कि NH8 मुंगिया कामी टू अम्बासा, NH108B 208B खुआई से मानिक भंडार और NH208A मानिक भंडार से कोयला शहर जो राष्ट्रीय राजमार्ग बना है, इनमें से कुछ खामियां दिखी गया है। जो इसमें से बीच में कुछ रास्ता जो काम हुआ है इनमें से बड़ा बड़ा जो होल हो गया है, जिसके कारण से इधर का फार्मर, स्टूडेंट या आम नागरिक का और खास करके एम्बुलेंस परिसेवाओं में बहुत बाधाएं विघ्न हो रहा है। मैं आपके माध्यम से NHAI जो मिनिस्ट्री है और PM गति शक्ति की प्रकल्प में जो ये काम चल रहा है, मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ जो ये जो जहाँ जहाँ ये क्षतिग्रस्त हुआ है, ये रोड में 3 रोड में मैं जो उल्लेख किया है, उस रोड में दोबारा सर्वे करके इसमें बजट बढ़ा के इसमें जो रास्ता बनाए वो टेक्सई हो या लॉन्जिविटी हो, ये ध्यान देने के लिए आपके माध्यम से मैं गुजारिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान देवाशीष सामंतराय जी। Thank you, Chairman sir. Thank you, Chairman sir. The matter I am bringing to your notice concerns each and every one of us in this house. Whenever the Prime Minister, President, Vice President
or cabinet ministers visit our constituencies, as MPs, we are invited and we are also there on the podium or on the stage. Recently, sir, Vice President of India, my chairman, the protector of this house, had visited Cuttack for Netaji Jayanti, and in that function, you went to inaugurate a building in memorial of Netaji, where when the foundation was laid by Naveen Patnaik ji, I was the MLA of Cuttack. And as Rajya Sabha MP, my nodal district is Cuttack. Sir, I request you, urge upon you, that the collector Cuttack, I think, not only invited me to the function, he didn't even have my name. There was Lok Sabha MP, there were all the local MLAs from BJD, Congress and BJP. This is such a insult to the privilege of this house. It's not personally Devasith Samantrai. I am a member of this august house and you are the keeper of this august house. I request through you, sir, that for all of our honors in this line, whenever anybody is visiting, the Cuttack collector, present Cuttack collector, should be issued a privilege notice, and you, sir, should protect the insult they have given to your house and to your members, sir. Thank you, sir. श्रीमान बालयोगी उमेशनाथ जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अत्यंत ही संवेदनशील राष्ट्रीय महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो करोड़ों देशवासियों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। माननीय सभापति जी, भारत नदियों का देश है और भारत में 20,600 नदियां विद्यमान हैं। ऐसे में उज्जैन जो सांस्कृतिक आस्था का केंद्र है, वहाँ 2028 में कुंभ का मेला, जो अवंतिकापुरी का एक महापर्व भी है और देश की करोड़ों जनता का आस्था का प्रतीक भी है। लेकिन बड़े खेद के साथ सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मोक्षदायिनी मां शिप्रा, जिसके तट पर करोड़ों श्रद्धालु संत महात्मा शाही स्नान के लिए आएंगे, ऐसे में वहां पर इंदौर से कान नदी का अत्यंत ही जहरीला और दूषित पानी शिप्रा नदी में मिल रहा है। उसकी जो पवित्रता है, उसकी पहचान उसकी वजह से दूषित हो रही है। उज्जैन औद्योगिक नगरों का दूषित जल भी वहां पर उस नदी में बह रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि नर्मदा शिप्रा लिंग का स्थायित्व शिप्रा को केवल पर्व का नहीं बल्कि स्थायी रूप से नर्मदा जी के जल से प्रभावमान बनाया जाए। इसके लिए नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के बजट और क्षमता के अविलंब वृद्धि की जाए। शून्य सीवरेज डंपिंग और केंद्र सरकार नमामि गंगे की तर्ज पर शिप्रा शुद्धिकरण के लिए विशेष आर्थिक पैकेज जारी करे, ताकि 2028 के पहले एक भी गंदा नाला शिप्रा नदी में ना मिले। शिप्रा शुद्धिकरण मिशन शिप्रा के उद्गम स्थल कंकरावाड़ी से लेकर उज्जैन तक नदी के पुनरुद्धार हेतु एक उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया जाए और इसका निष्कर्ष निकाला जाए। महोदय, सिंहस्थ कुंभ मेला एक मेला नहीं है, यह भारत की आध्यात्मिक आस्था का समागम है। यदि हम अपने तीर्थों की नदियों को शुद्ध नहीं रख पाए तो
आने वाली पीढ़ियां हमें क्षमा नहीं करेंगी। अतः मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से करबद्ध अनुरोध करता हूं कि निर्मल सिपरा अविरल सिपरा श्रीमान संकल्प को सिद्ध राजीव करने शुक्ला जी, श्रीमान संजय कुमार झा, I rise to draw the urgent attention of this House to the unregulated exposure of children to social media. In 2025, Australia enacted a law prohibiting under 16 from major platforms after a study showed 96% of children aged 10 to 15 use social media and 7 in 10 encountered harmful content. In India, a 2025 local circle study found that 82% of children aged 14 to 16 can operate smartphones. Only 57% use them mainly for education, and 76% access social media research. Media research indicates 11 to 37% shows problematic use, causing language and communication setback, social and emotional learning, nearly poor motor development, disrupted sleep, and reduced focus. As a countries worldwide evolve policy to regulate children's exposure to social media, I strongly support deliberation in this House to curb excessive screen time among toddlers, pre-teenagers, and teenagers. This is because the current literature on screen time exposure and children development broadly suggests that excessive screen use in early childhood is negatively associated with developmental outcome among children. While digital classrooms were unavoidable during pandemic, parents and school administration must actively monitor duration and content quality. According to the Indian Academy of Pediatric guideline on screen time among children, very early exposure to screen-based media and excessive screen time seems to be widely prevalent among Indian children. Also, a new study published based on survey of 3,624 parents across 5 Indian states found that screen exposure among children aged 2 to 5 far exceed the World Health Organization guideline. Such findings underscore the need for timely safeguard to protect development outcome. To begin with, smartphone being ubiquitous device in Indian household with over 85% of Indian household owning smartphones, they are used by children merit regulation. The House may consider specifically debating whether smartphone packs should carry a statutory use advisory. The economic survey 2025-26 has flagged the rapid rise of digital addiction and screen-related mental health problem as a major healthcare issue, particularly among children and adolescents. A timely intervention to safeguard the developmental milestone of India's adolescents is essential to leverage India's demographic dividend in realizing the goals of Viksit Bharat 2047. प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। शुक्रिया माननीय सभापति महोदय। इन दिनों जीरो आवर में नाम आना लॉटरी लगने जैसा हो गया है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय सभापति महोदय, एक विषय उठा रहा हूं। तात्कालिक प्रभाव से पिछले महीने जनवरी में आईआईटी कानपुर के एक छात्र ने आत्महत्या की। एक लंबी श्रृंखला है आईआईटीज, आईआईएम्स और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आत्महत्याओं की। हर आत्महत्या एक स्तर पर हत्या साबित होती है, क्योंकि उसके जो कारक हैं, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इंगित किया। माननीय सभापति महोदय, 2.5 वर्षों में एक आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली कि इन संस्थानों में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स आत्महत्या कर चुके हैं। कारण माननीय सभापति महोदय वैरी करता है, कहीं लैंगिक उत्पीड़न, कहीं जातिगत उत्पीड़न, कहीं आर्थिक संकट, लेकिन तीनों का के समावेश से जो परिस्थितियां पैदा होती हैं, उसमें कोई छात्र ये तय करता है अब बस